good morning to our dear sister, manager, Sister Annie, our principal, Sister Philomena, teaching and non-teaching staff, and my dear friends. Diwali is one of the most important festivals of the Hindus. It is also known as Deepavali or the Festival of Lights. The festival of Diwali has been celebrated for ages and grows in attraction by the years. Everyone enjoys the goodies, the shine, the glamour and the endless enthusiasm for living that suddenly grips people around this time. But there is much more to Diwali than feasting and merrymaking. Diwali. Diwali which leads with not to be put in the shade in the lights. Deepavali symbolizes the victory of light over darkness celebrated joyously all over the country. It is the festival of wealth and prosperity. Dhanteras, which falls on the 13th day of month of Ashwin, is the first day of Diwali. The word Dhan means wealth. The second day is called Nagarak Chaturdashi or Choti Diwali. The third day is the main Diwali day. This is sacred to goddess Lakshmi, the goddess of wealth. This is the day of celebration of feast and joy. Day 4 of Diwali is Nutan Varsha, the Hindus' New Year day for many regions of India. Day 5 is known as Bhai Dooj, love and good wishes between brother and sister. The preparations and rituals, the entire celebration focuses on home and family spanning out to cover the community as a natural extension. Diwali is a festival synonymous with celebrations in India and among Indians all over the world. This is an occasion for young and old, for men and women, rich and poor, all the religions. It is celebrated throughout the country to ward off the darkness and welcome the light into their lives. Deepavali is a festival signifying the victory of good over evil. The latter is destroyed and reduced ashes by fireworks and reduced to ashes by fireworks. The belief of the people, this festival is celebrated on a grand scale. chapter 5, verses 14-16. You are like light for the whole world. A city built on a hill cannot be hidden.
No one lights a lamp and puts it under the bed. Instead, he puts it on the lampstand, where it gives light for everyone in the house. In the same way, the light must shine before people, so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. The word of God. Thanks be to God. Praise and thank you, God, our Father of this day, the day in which we rejoice with our Hindu brethren and strengthen our relationship with them. You have illumined the universe with the sun, the moon, and the stars, and you have illumined our lives with the greatest of lights, Jesus Christ. Grant us that each of us become the bearers of Jesus, and through us, Jesus may be known to our non-Christian brethren. This we ask you through Jesus, your Son. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. पापा पापा मुझे भी नए कपड़े और मिठाई दिला दो, मैं भी कल दिवाली बनाऊंगा। थोड़ा सा सामान बिक जाए तो मैं तेरे को मिठाई और कपड़े दिलाऊंगा। बाबूजी ले लो। अंकल अंकल प्लीज ये दिया ले लो। नहीं चाहिए। पापा तो क्या अब मैं दिवाली नहीं बना पाऊंगा? और भाई दिवाली पे क्या कर रहे हो? भाई तेरा भाई ना दिवाली पे नई गाड़ी निकलवा रहा है, परसों देख के आए थे। और भाई मैं दिवाली पे नई बाइक ले रहा हूँ। मजा आ गया भाई। कल शाम को भाई ने दिवाली की पार्टी रखी है और भाई ये दोनों ने आना है। अरे भाई पक्का। भाई मैं तो दिन में ही आकर बैठा। इसको जितनी मर्जी पार्टी करा लो भाई। तैयार रहता है हमेशा भाई। ले लो बाबूजी, देखो देखो बाबूजी कितने अच्छे दिए हैं। ले लो बाबूजी। अरे भाई आज के टाइम में मिट्टी के दिए कौन लेता है? टाइम खराब मत करो, चलो चला यार। हाँ भाई ले लो बाबूजी। इधर आइए यार, दिवाली का क्या मतलब होता है भाई? भाई दिवाली का मतलब होता है नई चीजें खरीदना और एक दूसरे को गिफ्ट देना। भाई दिवाली का मतलब होता है खुशियाँ देना और खुशियाँ बांटना। अगर हम ही अपने देश का बना सामान नहीं खरीदेंगे तो फिर कौन खरीदेगा? अंकल जी दे दीजिए। भाई हमारे लिए पैक करना भाई। अंकल जी मेरे लिए भी पैक कर दो। पापा तो क्या अब हम भी दिवाली बना पाएंगे? हाँ बेटा, मैं तेरे लिए मिठाई और कपड़े लेके आऊँगा बेटा। हाँ अब हम भी दिवाली मनाएंगे। अगर हम ही अपने देश का बना सामान नहीं खरीदेंगे तो फिर कौन खरीदेगा? करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूरी की नवातें हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़ी दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़ी दीपावली आई रे।
झमाझम नाच आजे धमाधम ढोल बाजे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारियां जाले सारा जहां बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमरिया यार तारी कमरिया बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे कमरिया Canossians, here we rally round the banner of St. Magdalene. We sing your glory, Canossa alma mater. We pledge our love and loyalty to the school and to our motherland. Our tireless striving must always be for self truth and integrity. Canossians, here we
May you live your life like the festival of Diwali. Happy, healthy and wealthy Diwali to all.